Hello everyone. I hope you all are doing very good. Uh, Good evening, Jasmine. So today we are going to revise constitution law for the point from the point of view of CLAT and AILET PG. All right. So we are going to revise constitutional law, constitution for upcoming CLAT PG and AILET PG 2023 examination. All right. So first thing here is we have to analyze the previous year question paper. So if I take 2020 year 2020 CLAT PG previous year paper, there out of 120 questions approximately 70 were from constitutional law. All right, that shows that constitution itself is a very important subject. Now इसके बाद 2021 and 2022 के पेपर हो चुके हैं. All these three papers are from revised pattern. All right. So in तीनों में अगर आप चेक करेंगे, ऑलरेडी वी हैव टेकन द एनालिसिस ऑफ दीज टू पेपर ऑन आवर यूट्यूब चैनल. तो अगर आपने वो नहीं देखा है, आप जाके बिल्कुल देख सकते हैं. ठीक है. 2020 we haven't done. So in 2020, they asked 70 question out of 120 from constitutional law. Now, क्या क्या वहां पे required था? ठीक है. So the questions from legal awareness, then that time, all right, that time when on internet was in news, so that was again the point from where they have picked a question, legitimate expectations, master of roster, triple talaq was in news, and reservation. So the whole purpose of this particular slide here is that what is going to be important for your upcoming 2023 CLAT PG examination and 2023 AILET PG examination. क्योंकि इस वक्त पे ये चीजें हैं तो आप बिल्कुल एनालिसिस कर सकते हो. यू कैन pick the topics कि क्या अब आगे important हो सकते हैं. Okay, now Jasmine is saying, ma'am, when we will be having DCS session for gladiators batch very soon, Jasmine. If you have any query, you can leave your queries on in the comment box, or you can leave your queries on the support at toprankers.com. Good evening, everyone. Good evening, Shivani. Good evening, Durjiti. All right. So I hope the purpose, you have understood the purpose of this particular slide ताकि आप एक पैटर्न को decode कर पाए for your CLAT PG 2023. And from this slide, probably you got to know that constitution कितना important हो जाता है. And as I have been saying that in sample papers as well, constitution का एक काफी अच्छा weightage रहा है. तो it consider constitutional law as a primary subject for your entrance examinations, LLM entrance examination. All right, now we will see question of the day. So we have started this recently that every single day, irrespective of whatever session I take, I always ask you a question. This new concept have been introduced with a notion that आपको एक इंफॉर्मेशन मिले एंड आपको समझ आए कि सवाल किस तरीके से पूछे जा सकते हैं. सो हियर क्वेश्चन इज आर्टिकल 341 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस who would be scheduled caste with respect to any state or union territory. Second यहाँ पे है National Commission for Scheduled Tribe is an Indian constitutional body that was established through the 89th Constitutional Amendment Act 2003. The National Commission for Scheduled Tribe has been set up under Article 338A. Now, meanwhile, I'm reading the question for you. I expect कि अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर करें in the chat box. All right, now third here says as per 2011 census, among Indian state and union territories, Mizoram and Lakshadweep had the highest percentage of its population as ST scheduled tribe. Approximately, that was 95% that time. Next is, as per Article 46 of Constitution of India, states will have to promote and protect the educational and economic interest of scheduled caste and scheduled tribe. Now,
It shall protect scheduled caste and scheduled tribe from the social injustice and all form of exploitations. Now, right now I see 24 people are online. I expect जिसको भी इसका आंसर पता है वो आंसर दे सकता है. Ashi, already have given the answer. Ashi, you're saying that option B is going to be the correct answer according to you. Jasmine is saying C. But I want, if you're sitting on your study table, right, then I expect, I suggest, open your barrett. If you're on your study table, open your barrett once. Just open the index. All right. Once you will open the index, you will get to know that Article 341 of Indian Constitution यही define करता है. This article defines scheduled caste. All right, in respect of any state and UT. All right, what does it mean? It means that option A तो correct है. All right, so जो भी अपनी स्टडी टेबल पे है, या if you have multiple devices जिस पे आप बेरेट खोल सकते हो, मेरे साथ बेरेट खोलो. बिलीव मी, आपको ये सारी चीजें यही याद हो जाएंगी. नेक्स्ट टाइम आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑल राइट, नाउ आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट को डिफाइन करता है, तो ये सही है. ठीक है. सेकेंड जो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ scheduled tribes. All right, now when you will open article number 338A, 338A. All right, so article number 338A ओपन करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है. शेड्यूल ट्राइब को लेके नेशनल कमीशन के बारे में बात करता है. ऑल राइट, शेड्यूल कास्ट जो है, शेड्यूल ट्राइब जो है, अगर आप उसको देखोगे तो वो डिफाइन है आपका 342 में. किसी के पास डायरेक्ट है तो मेरे को बताओ 342 में शेड्यूल ट्राइब आपको मिला या नहीं मिला. Just open your barrett if you have one. All right. So मैंने आपको बताया 341 is 341, Article 341 defines scheduled caste. 342 defines scheduled tribe. All right. And 338A, Article number 338A, ये National Commission for Scheduled Tribe की बात करता है. It is absolutely correct that it was established by the virtue of 89th constitutional amendment. 89th constitutional amendment हुई थी 2003 में. ठीक है. The National Commission for Scheduled Tribe has been set up under 338A. Now option 1 करेक्ट है, ऑप्शन 2 करेक्ट है. ये दोनों चीजें आप लोगों को पता चल चुकी हैं. अब जिसका भी आंसर सी है वो गलत है, क्योंकि सी आंसर क्या कहता है, ओनली स्टेटमेंट 1 and 4 आर ट्रू. तो ये नहीं हो सकता. ऑल राइट, ब्यूटी, शिवानी, सौम्या, एक्सेप्ट अंकित, सबने या तो सी ही आंसर दिया है. तो सी आंसर कैसे होगा? आई एम सेइंग स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट. मैंने आपको बता दिया, अपने बैरेक में क्रॉस चेक कर सकते हो. ऑल राइट, यस देव, यू आर राइट. नाउ ऑप्शन नंबर 3 says as per 2011 census among Indian state and UT, Mizoram and Lakshadweep had the highest percentage of its population. Again, this is a correct option. Yes, Nazar, option number A is correct. Option number 4 says article number 46, ठीक है, जो कि DPSP में आता है, वो किसके लिए है? It is to promote and protect the educational and economic interest of SC and ST. That shows that option A is correct. मतलब ये चारों statement correct हैं. Now I think you got to know what is the purpose of picking this particular question, so that एक question में आपकी बहुत सारे concept, बहुत सारी factual चीजें जो आपके आने वाले examination में पूछी जा सकती हैं वो clear हो जाए. All right, so let's have a quick revision that by this question whatever we have gathered or understood. First, Article 341 Schedule Caste define करता है. Second, Article number 342 Schedule Tribe define करता है. Third, Article 338A में National Commission for Scheduled Tribe है, जो कि add हुआ था 89th Constitutional Amendment से. 89th Constitutional Amendment 2003 में हुई थी. Then 2011 के सेंसस से यूटी, मिजोरम, लक्षद्वीप, यहाँ पे
highest number of scheduled tribes थे, and that was approximately 95%. And then we have seen that article number 46 जो कि DPSP में आता है, that is to promote and protect the educational and economic interest of scheduled caste. I hope जो मेरा पर्पस है वो यहाँ सॉल्व हो गया है. Now we will move forward. Before that, I would request you, if you like my session, do press the like button. If you don't, you have all the rights to leave your suggestions in the comment box so we can improve. All right. Now some of the prominent laws जो कि reservation policies के लिए हैं, ठीक है. So these are the laws we are studying for reservation policy. Now there might be a question in your head कि मैम आप बहुत easily फंडामेंटल राइट स्टार्ट करके और सिटीजनशिप स्टार्ट करके आर्टिकल 1 स्टार्ट करके प्रियम्बल के साथ रिवीजन करवा सकते हो. I know मैं करवा सकती हूँ, but these classes are specifically meant for your upcoming AILET and CLAT PG examination. और वहां पे जिस तरीके का analytical knowledge required होता है, LegalEdge after college tries to give you that so that directly वो आपके exam में hit करे. Now यहाँ पे we are going to see the prominent laws which are for reservation policies. All right. First one here is article number 15 clause 4. Now from article number 15 बहुत सारे questions बनते हैं. The most important question from here is that it was added by which amendment. So it was added from or by फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि हुई थी 1951 में, ठीक है. इट टॉक्स अबाउट स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस. नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 5. ऑल राइट. सो 15 क्लॉज 4 First Amendment 1951. When it comes to 15 clause 5, 15 clause 5 जो है ना वो ऐड हुआ था 15 clause 5 93rd Amendment 2006. You have to remember this. All right. 15 and 16, article number 15 and 16, इन दोनों में जितनी भी amendment के year हैं, right, you have to remember this. So article number 15 clause 5 93rd amendment 2006 से ये add किया गया था, and it deals with provisions for reservation for backward classes, scheduled caste, scheduled tribe classes in private educational institution. All right. Now next is 16 clause 3. All right. Okay, Jasmine here is asking how to remember all these amendments. Jasmine, there is no other option than revising and re-revising it. All right, and you can correlate. Now here you can establish a correlation in a manner that if you're reading First Amendment, then you have to read the or whatever has happened in First Amendment then and there. All right, and you have to make a short note out of it so that आपके revision में आपको वैसे याद हो जाए. So there are two kind of people. जिन लोग एक जो वो लोग होते हैं जिनको एक इंफॉर्मेशन अगर कंसोलिडेटेड फॉर्म में होती है तो याद होती है. देयर अदर काइंड ऑफ पीपल जिनको स्कैटर्ड फॉर्म की इंफॉर्मेशन जो है वो याद रहती है. यू हैव टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, and in my opinion revision is the only key by which you will be able to remember the amendments. Now article 16 clause 3, ठीक है, ये बात करता है reservation of post in public employment on the basis of resident. Now यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि 16 clause 3 कब ऐड हुआ. Now it's on you. Kindly write in the chat box कि when article 16 clause 3 was added by the virtue of which amendment in which year. Now this is a question. Just quick write in the chat box. 16 clause 3 कब ऐड हुआ. Quick. So right now I can see 25 students are online. I expect approximately 20 answers right now. My question here is article 16 clause 3 added in which year by the virtue of which constitutional amendment? Okay, Akriti is saying 7th. What about others? Okay, so here 16 clause 3. All right. So यहाँ पे so I'm taking my words back as I have seen added. All right, amended. My correct terminology should be amended. So article 16 clause 3 में कोई amendment हुई थी. कब amendment हुई थी वो? That is my question. So Akriti, you are right. By the virtue of 7th constitutional amendment,
सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में अमेंडमेंट की गई थी. रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंस इट टॉक अबाउट. ऑल राइट. All right. Now, Article 16 clause 4. So Article 16 clause 4 में कभी कोई amendment नहीं हुई, उसमें add हुआ है नजर. Yes, उसमें add हुआ है. That is what I'm saying. And Article 16 clause 4 में कोई amendment नहीं हुई है. अगर हम इसके आसपास के आर्टिकल्स की भी बात करें तो आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 4A ये कब ऐड हुआ था? Article number 16, clause 4A was added. We all know about it that it got added. Article number 16 में clause 4A भी है and 4B भी है. तो आप मेरे को जल्दी से बताओ that 4A and 4B कब add हुआ था? 15 के 4 में फर्स्ट अमेंडमेंट से अमेंडमेंट हुई थी, 15 के 5 में 93rd से अमेंडमेंट हुई थी, 16 के 3 में 7th से अमेंडमेंट हुई थी एंड 16 का 4 कभी ऐड नहीं हुआ है. Now I'm asking. Okay, Jasmine is saying 16th clause 4E was added by 77th amendment and the year was 1995. What about 16.4b? 16.4b was added by 16.4b 80. Yes, 81st amendment, and what was the year? It was 2002. So till here, we are reading the articles which are important for reservation policies. So we started from article number 15.4. So 15.4 में amendment हुई थी first constitutional amendment 1951 से. Then we read 15 clause 5, 93rd constitutional amendment 2006. Then we have seen article 16 clause 3 which talks about reservation of post in public employment on the basis of residence. There we have seen that it got amended, not inserted, it got amended by 7th constitutional amendment. Then we have seen article number 16.4A जो कि ऐड हुआ था 1995 में and 16.4B which was added in 2002. 16.4A जो था उसकी amendment थी 77th and 16.4B की 2002. ये सारी information आपके आने वाले CLAT PG and AILET PG के लिए, और for example you're preparing for judiciary, then also यहाँ से काफी सारे multiple choice questions बनाए जाते हैं. Now आर्टिकल 15 में कब क्या ऐड हुआ वो कोई मेरे को बताएगा क्या? Anyone in the class will let me know then that article 15 में something was added, when that was added, और कुछ ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ है. So we have studied about 4, ठीक है, we have studied about जो 5 में changes हुए थे, ठीक है. क्या इसके बाद जैसे यहाँ पे 16.4A 16.4B है, क्या आर्टिकल 15 में भी ऐसी कोई अमेंडमेंट्स हुई हैं? दिस इज माय क्वेश्चन. या कुछ आर्टिकल 15 में भी ऐड किया गया है? Something new was inserted in article 15 also or not is my question. Yes, absolutely right. So यहाँ पे Aniksha is saying that by the virtue of 103rd constitutional amendment 15 clause 6 was added. All right. So अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा, no, so Nazar you are wrong, Akriti you are right, Soumya you are right, Aniksha you are right. Yes. So yesterday I've taken a video where I have taught you the relationship of two amendments. All right, there I have discussed this as well. Yes, absolutely right. So 105th constitutional amendment से 15 में 6 ऐड हुआ है and 16 में 6 ऐड हुआ है. All right, so 15 clause 6 and 16 clause 6 ये दोनों ऐड कब हुए हैं? देखिए दोनों ऐड हुए हैं by 105th constitutional amendment. All right, 2019. और इसका बिल कौन सा था? 127th constitutional amendment bill it was. All right, so I hope जो भी information यहाँ पे मैं देना चाहती थी आपको मिल गई है and you're going to remember this as it is important. Now article 330 342 ये सारे के सारे बात करते हैं special provision for certain classes in society. यहीं पे हमने
फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये देखा था कि आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट एंड आर्टिकल 342 शेड्यूल ट्राइब को डिफाइन करता है। देन आर्टिकल 45 ये डीपीएसपी में आता है एंड इट टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। State have a duty to raise the standard of living and health of backward classes. Article 39A ये बात करता है, ये अगेन डीपीएसपी में है, ये बात करता है to ensure justice and free legal aid to economically backward classes. All right, Soumya is saying also it was recently discussed in with respect to Janhit Abhiyan versus Union of India. Absolutely right. Absolutely right. Now, anyone in the class will let me know that Article 39 A was added in which year by the virtue of which amendment? Quick, I want this answer. Fifth, 105. 100. So Akriti here is asking by the virtue of 105th से क्या amendment हुआ? 15(6) and 16(6). All right. 39A कब add हुआ? Article 39A which deals with directive principle of state policy कब add हुआ है constitution में? कौन सी amendment थी? Shivani is saying 42nd, Anshulna 42nd, right. Now tell me the year of 42nd constitutional amendment. Yes, Shivani, 1976, which is also known as mini constitution. All right, तो ये तो किसी को भूलना ही नहीं है. All right, so it's very simple that जो 39A है फ्री लीगल एड की जो बात करता है, ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ था. ऑल राइट, सो यहां तक सब क्लियर है, आगे बढ़े? Or do you want me to repeat something? All right, so we are moving forward now. So now you have to understand कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फॉर एलेट एंड क्लैट पीजी. सो ये जो फंडामेंटल राइट्स है इन्हें हम फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? वी ऑल नो, ये आपने अपने कॉलेज में भी पढ़ा था, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, दे आर एंश्राइन्ड इनटू कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे आर एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. अगर इनका वायलेशन होता है तो एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज now we are seeing the fundamental rights. So there are 6 in total fundamental rights: right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Now, right to equality from article 14 to 18 we study about this. Right to freedom 19 to 22, right against exploitation 23-24, right to freedom of religion 25 to 28, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट जहां पे हम मिनोरिटी के बारे में ही पढ़ते हैं 29-30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32. ऑल राइट, नाउ राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी को लेके हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि ये है क्या. सो राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ लीगल राइट. ठीक है, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज अ लीगल राइट. नाउ पहले राइट टू प्रॉपर्टी यूज्ड टू बी अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, however the right was removed from the list of fundamental rights by 44th constitutional amendment. Now यहाँ पे अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं because they always mark 42nd, but it happened by the virtue of 44th constitutional amendment, not by the virtue of 42nd constitutional amendment and 44th. This was because this right proved to be hindrance toward attaining the goal of socialism and redistribution of wealth equitably among the people. All right, it is a legal right. All right, and it is a constitutional right as well. Now, right to equality, अगर हम right to equality देखें तो right to equality is from 14 to 18. Now read this very carefully. Right to equality guarantees equal right for everyone. For everyone, when I say everyone, तो क्या article 14 से 18 citizens and non citizens मतलब foreigners पे भी applicable होते हैं? Yes, it is a constitutional right as it is provided in Article 300A. All right, but it is a legal right as well. Yes, tell me, I'm asking that right to equality guarantees equal right for everyone. ठीक है, तो everyone का मतलब यहाँ पे क्या है? क्या ये foreigners पे भी applicable होते हैं? So
Most of you are saying yes. What about others? There are many people who are online right now. Yes, it is important, Aniksha. Aniksha is asking hijab case important hai? Important hai. Answer is yes. Richa is saying no. Akrati is saying no. So, Article 14 यहाँ पे, so we are going to discuss about this. I incorporated a slide जहाँ पे मैं बताऊंगी आपको कौन से article citizens and non citizens पे लगते हैं, कौन से article citizens पे लगते हैं. This was just a question so that you think in this manner. Now, understand Article 14. Article 14 क्या बात करता है? Article 14 talks about equality before law and equal protection of law. आर्टिकल 15 क्या बात करता है? तो हमने अभी देखा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. तो मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इन ग्राउंड्स पे नहीं होगा, ये बोलता है आर्टिकल 15. आर्टिकल 16 बोलता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है, इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है आर्टिकल 16. आर्टिकल 17 कहता है abolition of untouchability. All right, Article 18 abolition of title की बात करता है. Abolition of title, abolition of untouchability is 17, abolition of title is 18. All right, so ये सारे rights आते हैं right to equality में. So it's very clear from the heading itself कि इन इस पूरे ब्रैकेट फ्रॉम 14 टू 18 का पर्पस ही ये है टू मेंटेन द इक्वालिटी. अब इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या चीजें हटानी पड़ेगी, जैसे कि जो अनटचेबिलिटी है उसे हटाना पड़ेगा, टाइटल्स को हटाना पड़ेगा. तो वो सारी चीजें यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर दी गई. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी राइट टू फ्रीडम. नाउ व्हेन आई से राइट टू फ्रीडम, यहाँ पे आर्टिकल 19 से लेके 22 तक आते हैं. नाउ आर्टिकल 19 itself is a very very important article and ये आपके क्लैट एंड एलेट पीजी दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है. इससे रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स, इससे रिलेटेड सारे रिस्ट्रिक्शंस, इससे रिलेटेड सारे केस लॉस पढ़ के जाना है. आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है. ऑलराइट, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है. एंड यहीं पे आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्लोगन राइट ऑफ ओनली टू सिटीजंस इन इंडिया. नाउ यहाँ पे वी ऑल नो आर्टिकल 19 सिर्फ सिटीजंस पे लगता है. ठीक है. इसके बारे में हम फिर मैं बोल रही हूँ कि इसी वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कौन से आर्टिकल सिटीजंस पे एप्लीकेबल है, कौन से नॉन सिटीजंस पे हैं. ठीक है. एंड एक्सप्रेशन, असेंबली विदाउट आर्म, एसोसिएशन, प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन, ठीक है, ये सारे आपके आर्टिकल 19 में आते हैं. नाउ आर्टिकल 20 जो राइट टू फ्रीडम में है, इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ conviction for offenses. It talks about protection in respect of conviction. ठीक है. conviction, so conviction for offenses की बात करता है आर्टिकल 21. अगेन सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट्स का, और यू कैन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का. एंड आर्टिकल जो 21 है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की. ठीक है. प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है. नाउ आर्टिकल 22 क्या बात करता है? एनीवन इन द क्लास विल लेट मी नो व्हाट आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट. आर्टिकल 22 डील्स विद प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन. ठीक है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन. एंड इसके बीच में आर्टिकल नंबर 21A ये ऐड किया गया था एंड इट डील्स विद राइट टू एजुकेशन. ऑल राइट. Yes, absolutely right, Soumya. Now we are moving forward and we will see right against exploitation. Right against exploitation में article number 23 to and 24 आते हैं, जहां पे 23 क्या बात करता है? prohibition of traffic in human being and forced labor. ठीक है. prohibition of traffic in human being and forced labor. And 24 deals with
प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। सो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज ये बात करता है 24, ठीक है। नाउ यहीं पे एज आती है 14 ईयर्स की। जो बच्चे 14 साल से छोटे हैं वो हजार्डस कंडीशन में काम नहीं कर सकते। दिस इज रिटन हियर, दिस 14 ईयर्स इज इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं 25, 26, 27, 28। नाउ यहाँ पे आर्टिकल नंबर 25 बात करता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। नाउ इसको आप याद रख सकते हो 4 P से, ठीक है। तो यहाँ पे CPPP है, ठीक है। इट इज फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, ठीक है, फ्री प्रोफेशन, free practice and free propagation. All right, so this is article number 25. 26 क्या बात करता है? Freedom to manage religious affair. Article number 26 deals with freedom to manage religious affair. 27, आर्टिकल नंबर 27 यहां से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आर्टिकल नंबर 27 किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. All right, so पेमेंट ऑफ टैक्सेस की बात 27 करता है। एंड व्हेन आई से 28 which is last article in right to freedom of religion, it deals with freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institution. All right, now we will move forward and we will see cultural and educational right. So set of two articles deals with cultural and educational right 29 and 30, where 29, article number 29 talks about protection of interest of minorities. All right, protection of interest of minorities is 29, and 30 talks about right of minorities to establish and administer educational institution. तो अगर आपसे सवाल जो है वो ये पूछा जा रहा है कि कौन से आर्टिकल में minorities के पास right है to establish their own and to administer their own educational institution, then you always have to mark article 30. All right, now next is from article 32 to 35. 32 we all know it is constitutional remedies का right. अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वॉयलेट होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो अंडर आर्टिकल 32 itself. And one more thing you have to remember, that article 32 is remedies as well, and it is a right as well. Okay, so it falls under the chapter 3 of Constitution of India, part 3 of Constitution of India. ये fundamental right के chapter में आता है. It is your fundamental right, and it talks about constitutional remedy. All right, now आर्टिकल नंबर 33, कोई बताएगा इन द क्लास दैट आर्टिकल नंबर 33 किस बारे में बात करता है? उसके पहले आर्टिकल 32A हुआ करता था जो बाद में रिपील कर दिया गया. नाउ आर्टिकल नंबर 33 इट टॉक्स अबाउट अंडरस्टैंड वन थिंग. जनरली हम आर्टिकल 32 पे अपना फंडामेंटल राइट का पार्ट कंप्लीट कर देते हैं. वी ऑलवेज इग्नोर 33, 34 एंड 35. दीज 3 आर्टिकल्स दे आर इंपॉर्टेंट. यहाँ से these days the trend is यहाँ से questions बन रहे हैं. तो आर्टिकल नंबर 33 as आकृति mentioned, it talks about power of parliament to modify the rights conferred by this part in their application to forces. Article number 34, restrictions on right conferred by this part while martial law is in force in any area. And article number 35 talks about legislation to give effect to the provisions of this part. All right, so ये तीनों group of articles भी यहाँ important हो जाते हैं. You have to study. Now, as I mentioned that कि मैं आपको बताऊंगी कौन से आर्टिकल सिटीजन्स पे एप्लीकेबल है, कौन से आर्टिकल सिटीजन्स एंड फॉरेनर्स मतलब नॉन सिटीजन्स पे भी एप्लीकेबल है. तो सिटीजन्स पे जो आर्टिकल सिर्फ एप्लीकेबल हैं वो हैं फर्स्ट citizens and not to foreigners. तो citizens पे हैं prohibition of discrimination on ground of race, religion, caste, gender or place of birth. मतलब आर्टिकल नंबर 15 सिर्फ
सिटीजन्स के लिए है, इट इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। आर्टिकल नंबर 15 सिर्फ सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, मतलब जो फॉरेनर्स हैं उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है, बट जो सिटीजन्स हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है इन ग्राउंड्स पे। देन आर्टिकल नंबर 16 जो बात करता है अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे भी ये भी सिर्फ अवेलेबल है फॉर सिटीजन्स, ठीक है, ये नॉन सिटीजन्स पे अवेलेबल के लिए अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स कि अगर कोई नॉन सिटीजन है, फॉरेनर है, तो अगर उसको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी इक्वालिटी की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, देन वो इसके अगेंस्ट आर्टिकल नंबर 32 दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी में नहीं जा सकता। देन प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 which is protection of freedom, it is also available only to citizens, remember this thing। तो सिर्फ जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं दे हैव द राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, असेंबली, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन, ठीक है। आर्टिकल नंबर 29 जो कि कल्चरल लैंग्वेज स्क्रिप्ट ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करता है, जो भी माइनॉरिटीज का कल्चर है, ठीक है, उसे प्रोटेक्ट करता है, दैट इज अगेन एप्लीकेबल ओनली और अवेलेबल ओनली टू सिटीजन्स। एंड आर्टिकल नंबर 30 is also only available to citizens। Now understand, ये बहुत लॉजिकल है। कोई अगर नॉन सिटीजन है तो क्या आप उसको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी दोगे या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दोगे? नहीं दोगे। या कोई नॉन सिटीजन है तो क्या उसको ये लिबर्टी मिलेगी कि वो एसोसिएशन फॉर्म कर पाए, या वो अपना कल्चर, मतलब अगर कोई फ्रांस से है तो वो फ्रांस से आके क्या वो अपना कल्चर यहाँ इंडिया में अपनी लैंग्वेज यहाँ प्रोटेक्ट करवा सकता है? आंसर इज नो। सो दिस लिस्ट इज वेरी लॉजिकल, यू नीड नॉट टू रिमेंबर इट, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड इट वाइजली। ऑल राइट, नाउ अगर हमें फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है, ठीक है, वैसे तो आप सबने अमेंडमेंट का प्रोसेस पढ़ा होगा, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। तो अगर आपको कभी भी फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना है तो पहले तो क्या अमेंड किए जा सकते हैं? लेटर फाइनल सेटल्ड लॉ ये कहता है कि यस बिल्कुल किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको करना है तो वहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ साथ आपको दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से उसे पास कराना होता है बाय स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कहता है दैट कोई भी अगर आप चेंज करते हो, कोई भी आप अमेंडमेंट करते हो कॉन्स्टिट्यूशन में, इट शुड नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट। नाउ ये जो क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट, दिस क्वेश्चन इज एन इशू सिंस लॉन्ग। सबसे पहले ये सज्जन सिंह के केस में 1965 में आया था, एंड यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सज्जन सिंह केस इन 1965। In Sajjan Singh case, it has been held that any part of the constitution, including fundamental rights, are amendable. Later in 1967, ठीक है, जब गोलकनाथ का जजमेंट आया 1967, when गोलकनाथ judgment came into picture, it was held that fundamental rights cannot be amended, ठीक है। पहले बोला गया अमेंड किया जा सकता है, इन 1965 1967 में कहा गया नहीं किया जा सकता है। ये इशू पहुंचा लार्जर बेंच के पास इन केशवानंद भारती केस 1973। यहाँ पे कहा गया कि आप बिल्कुल किसी भी पार्ट इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू यू ऑलवेज हैव टू प्रोटेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ इसी बेसिस पे नाउ द इंडियन जुडिशरी के पास किसी भी अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन करने की पावर है, ठीक है। एंड जो 1973 में हुआ था फिर से 1981 में रिटरेट किया गया। ऑल राइट, नाउ it also drew a line of demarcation as April 24 1973। so आपने अपनी फैकल्टीज में आपने अपनी okay, it was Shankari Prasad, all right। so मैं यहाँ पे I'm talking about only in respect of amendability of fundamental rights, Soumya, all right। so I'm not saying that first case ever, all right, I'm just saying in context of amendability of fundamental rights, ठीक है। जबकि वहां पे भी ये बातें थी, ऐसा नहीं है नहीं थी, ठीक है। नाउ यहाँ पे जब हम देखते हैं, सो आपने अपनी लॉ कॉलेजेस में सुना होगा कि ये 24 की जो अप्रैल की डेट 1973 की है, इसे याद कर लो बिकॉज ये एक डिमार्केशन है, इट इज अ डिमार्केशन। मतलब
डिमार्केशन किस बात का, क्योंकि इस दिन जजमेंट आई थी केशव चंद्र भारती की, एंड ये जो जजमेंट है ये प्रोस्पेक्टिव इसका एप्लीकेशन है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। दैट मीन्स कि इसके बाद जो अमेंडमेंट होगी वो फंडामेंटल राइट में हो सकती है। ठीक है, सो द डेट ऑफ केशव चंद्र भारती जजमेंट एंड हेल्ड दैट इट शुड नॉट बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल नहीं थी, इट वाज एप्लीकेबल प्रोस्पेक्टिवली। ऑलराइट, नो आई होप आपको जितना भी यहाँ पे मैं एक वीडियो में जो भी मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस आपको हेल्प करते हैं इन योर एग्जामिनेशन, you can leave the comment in the comment box, you can like the video, and if you want then you can leave a mail on bhumika@toprankers.com or support@toprankers.com. All right, so keep studying. Till then, bye bye. Bhumika and Gauri signing off.